again your Asha ma'am is here with another activity. Okay, you know that we have completed our 2 chapters, so now we are moving towards the third one, that is articles. Okay, and I brought this beautiful activity for explaining how we are going to segregate the different words according to their articles. Okay, so let us start the activity. Okay, so here you can see my chart. Okay, you can see that three pots I have created, like A, N and the pot. You know that like recently only World Environment Day we have celebrated, our school has celebrated, but as you were not there, ठीक है, your session have been started from 7th of June, तो आप नहीं celebrate कर पाए. So on the occasion of that also I just want to share this activity with you for celebrating World Environment Day also. ठीक है, you know that plants are so important for us. So here you can see that A pot is there, N pot is there and the pot is there. Now what we are going to do here, you can see that the leaves are there. Okay, so, and I have written some names over there. You can see that some names over those leaves. Okay, so now what we are going to do, whatever leaf I am going to take, we are going to segregate them as A and the wise. Means आपको ये देखना है कि what has been written on leaf, like यहाँ पे देखो cat दिखाई दे रहा है, तो cat के पास which article we should put, like A article, N article or the article, and that way we are going to do this activity. Okay, so let us start, बच्चास. चलो, so here I am going to take first door. आपको दिखाई दे रहा है door. Okay, so now door is a singular noun. Okay, and it is a common noun also. ठीक है, we have taught what. Okay, so you can see that door is there. ठीक है, तो now which article can come for door A and the? तो आप बोलोगे मैम D word is there. Okay, और the को तो हमको पता है that for specific items only we can write the as article. Okay, so between A and N you are going to make choice. Okay, so here A for, हमने A में क्या सीखा था, that all the consonant, whatever words will be starting with the consonants, we are going to keep A for them, for singular. And N के लिए the vowels list are there with you, like A, N, A, E, I, O, U. So that word D is having vowel or consonant as first word, beta. So you will say, man, this is D, this is consonant only, it is not vowel. तो हम क्या करेंगे, D वाले word को, which category it will go to? A plant. Okay, so I'm going to stick door to the A plant. Okay, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा रहे हैं door. Okay, चलो फटाफट we are going to do. Okay, तो door लग गया. Now I'm going to take next one. Now you can see that this is the second word, that is ink pot. Now again you have to see that ink pot. Okay, ink pot में particular thing ink pot is there? No, it is a common thing. ठीक है, so द तो नहीं आएगा वहां पे. So now you have to select between A and द तो नहीं आएगा बेटा. So यहाँ पे you can see that ink pot will go to A category or N category. So you have to see the first letter ink pot, that is starting from I. And what is I? Whether it is a vowel or a consonant. So you will say, ma'am, I is a vowel. So vowel आ गया, A, E, I, O, U, 5 vowels are there. तो हम यहाँ पे किस प्लांट में लगाएंगे ये लीव को we are going to keep that leaf in N category. Okay, तो यहाँ पे again I'm going to place this leaf ink pot. ठीक है, चलो now I'm going to pick next one, cap. अभी इतना ज्यादा explain नहीं करूंगी. Every time you have to look at the first word. Okay, cap is also the common type of leaf, that is common type of word. So it will not go to the cap cannot be possible. So now again we are going to make the choice between A or N. So a cap or N cap. So you will say, ma'am, cap is starting with the word C and C is not the vowel नहीं है तो N में तो नहीं जाएगा. So which way what way the word will go? To the A plant. Okay, so I'm going to stick A. ठीक है, हम A में लगा देंगे इसको. ठीक है, तो A के 2 leaves लग गए हैं. Now I am having next leaf, that is universe. Okay, next word is universe. So universe का मतलब क्या होता है बेटा? Universe means where the stars are, where all the planets, all the stars, all the, we can say that natural satellites है ना. So all are in universe. Universe का गुजराती में मतलब होता है ब्रह्मांड. Okay, so सब कुछ ब्रह्मांड में है. So it is in one. It is a particular thing. It is a specific thing. ठीक है, universe एक ही है. So that's why no doubt many universe
यूनिवर्सेस आर देयर इन यूनिवर्स, बट होल पूरा जो एक है वो ब्रह्मांड बनाता है. सो यूनिवर्स इज अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वर्ड. ओके, नो डाउट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बट यहाँ पे हमने पहले ये डिसाइड कर लिया दैट एज इट इज अ स्पेसिफिक वर्ड. ओके, सो ये ए तो नहीं आएगा. ओके, सो यू कैन सी दैट यूनिवर्स. ओके, यूनिवर्स अपने में सिर्फ एक ही है, नो मोर यूनिवर्सेस आर देयर. वी अंडरस्टूड द मीनिंग यूनिवर्स बाय द वे इट इज. ओके, सो यस, एज इट इज शोइंग द स्पेसिफिक कैटेगरी टू अस, तो इट विल गो टू ए, नो. Will it go to N? No. So which part or to which part the leaf will go? So to the category. So I'm going to stick the. Okay, the plant में हम ये वाला leaf लगा रहे हैं. ठीक है, चलो. It is starting from here. So I'm just keeping here. ओके, आप थोड़ा सा देख लेना, ये यूनिवर्स है बेटा. ठीक है, प्लांट वाइज आई एम लाइक पुटिंग द लीव. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वन. यू कैन सी दैट कार. तो ये तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, मैम कार है, सी है, इट इज कॉन्सोनेंट. सो विच कैटेगरी बेटा? अ कार, एन कार और द कार. तो द तो नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक. सो मेनी कार्स आर देयर. सो यू से एन कार, नो, vowel is not there, so consonant is there, C. So I'm going to keep this, or I'm going to like apply this leaf to this A pot. ठीक है, a car. So now I am having the next word, orange. Okay, so orange starts with O. So A orange, no. N orange can be. The orange cannot be possible because it is not, means so many oranges are there. तो specific word तो नहीं है. So देखो बेटा, it is starting with O and O is a vowel. Very good. याद करो, A E I O U. So O is a vowel. So I'm going to keep this leaf into N pot. ठीक है, हम N point पे लगाएंगे ये N. चलो, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आवर. ओके, ये आपको समझना है. लुक एट दिस वर्ड, HOUR. आवर का मतलब 1 घंटा. ठीक है, नाउ इट इज स्टार्टिंग विथ H विच इज कॉन्सोनेंट. ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं है, तो ध तो हम भूल जाएंगे. वी विल बी सेग्रीगेटिंग और विल बी मेकिंग चॉइस बिटवीन A and N only. Okay, now H is there. Pronounce the word hour. We are not saying hour. H is silent here. Oh, we are saying hour. So means मैंने बोला था बेटा, you have to focus on the sounds only. तो sound में हम H तो नहीं बोल रहे. We are saying directly O. So O is a consonant. O क्या है बेटा? It is an consonant. तो N आएगा वहां पे. So it is an exception. Hour, as we are pronouncing hour, so it will go to that N pot. वो N pot में आएगा. ठीक है, मैंने बोला था that you have to focus on the sounds, not the word or the letter. हमको letter पे focus नहीं करना है. We are going to focus on the sound, and the sound is starting with that vowel sound. So as it is starting with the vowel sound, I am going to keep this leaf here. ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला पत्ता लगाऊंगी. चलो. So sorry, I just placed it wrongly. ठीक है, it will be here. Okay, now the next word is girl. बहुत easy है. It is also starting with the consonant a, girl, and girl cannot be possible. The girl cannot be possible. तो क्या आएगा बेटा? A girl, because it is starting with the vowel G. Okay, so I'm going to like place this leaf on this A pot. ठीक है, चलो, आई एम पिकिंग द नेक्स्ट वन, एंट. ये तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा. एंट, इट इज स्टार्टिंग विद दी वोवेल. सो ए एंट कैन नॉट बी पॉसिबल. एन एंट, एंट का मतलब चीटी. तो एन एंट यस कैन बी पॉसिबल बिकॉज ए इज देयर एंड ए इज दी वोवेल. ओके, तो मैं इसको एन पॉट में लगाऊंगी. ओके, चलो, दिस इज योर एन पॉट. ठीक है, ये एन पॉट पे लग गया. नाउ आई एम हैविंग द नेक्स्ट वन, एप्पल. अगेन इट इज स्टार्टिंग विद द वोवेल AEIOU. ये तो पहला वाला ही वोवेल है. तो विच प्लांट इट विल गो? A and the. तो यू से मैम एन एप्पल कैन बी पॉसिबल, है ना. सो आई एम गोइंग टू स्टिक इट इनटू एन पॉट. नाउ इट इज मेकिंग क्लियर. आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, वेरी क्लियर, है ना. अभी सब कुछ क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज umbrella. So again umbrella is starting with the letter U, and U is which type of letter beta? It is a vowel letter, AEIOU, and U को हम specific category में नहीं ला सकते because so many umbrellas are there in the world. Okay, it is not specific into the nature, so that's why which A will that? A umbrella,
एन अम्ब्रेला और द अम्ब्रेला. So you will say ma'am an umbrella क्योंकि sound is coming A only and A is the vowel sound. So that's why I am going to stick this leaf in that N point. Okay, N pot. So sorry. So here umbrella. Okay, so now I am going to take the next one, that is table. Okay, you can easily see that table is starting with the letter T and T is the vowel or a consonant. So you will say ma'am T is not a vowel. Vowel तो नहीं है ना, vowels are 5 A, E, I, O, U. So T is not there. So T is the consonant. So I am going to keep this leaf into A pot. Okay, चलो A pot में लगा देते हैं ये वाला leaf. That is table. ठीक है, लग गया. चलो now we are moving towards the next leaf. Next leaf is cat. Cat is starting with the letter C and C is vowel or a consonant. क्या हुआ C? क्योंकि देखो द कैटेगरी में तो नहीं जाएगा. So many cats are there. So it is not specific. So that's why we have to make the choice between A and N. तो N में क्या है? ये C है. C is starting with the consonant. So consonant मतलब A cat. Okay, so I'm going to keep this leaf into A pot. Okay, चलो A pot में लगा दे इसको. So this is cat. Okay, चलो now the next is, what is next? World. Okay, world का मतलब होता है दुनिया. So दुनिया is a specific. Okay, one world is there. We are living on the planet Earth and the whole world, पूरी दुनिया, in which so many countries are there who are living. Okay, so it is a word which is specific. ये एक specific word है. Specific word world. Okay, world is a specific word. So that's why as it is showing you some specifically, like specific आपको कुछ particular बता रहा है. Okay, it is one in nature. So that's why it will go to the category, the world. Okay, ये होगा the world every time. So I am going to stick this leaf in that the pot. हम ये the pot में लगाएंगे ये वाले leaf को. ठीक है, यहाँ पे लगा दे रहे. चलो. Okay, I hope that is visible to you. चलो, the next is sun. Sun is also a specific category. Sun मतलब the like we can say the star which gives us heat and light. So only one sun is there, है ना? No doubt many stars are there in the universe. Sun is also a star. But हम एक ही sun को पहचानते हैं. Whenever we are thinking of sun, तो हमको वो वाला sun which is shining right now in the sky वही हमको याद आता है ना बेटा? So that's why it is also a specific category. So we are going to keep this leaf or we are going to stick this leaf into the pot. हम इसको कहाँ पे लगाएंगे बेटा? The pot में लगाएंगे. That is the sun. Okay, so let me keep this. ठीक है, मैं इसको द सन यहाँ पे लगा दे रही हूं, देख लेना आप लोग. ठीक है, चलो. नाउ द नेक्स्ट इज, क्या है ये? अर्थ. द सेम वे जब हम अर्थ नाम बोलते हैं, व्हेनेवर वी आर टेकिंग द नेम ऑफ वर्ड्स नेम अर्थ, सो मीन्स किसका हमको याद आता है? दैट द अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग, है ना? द प्लैनेट ऑन विच वी आर लिविंग, दैट इज कॉल्ड अर्थ. अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी. सो दैट्स वाई दैट इज ऑल्सो मेकिंग द स्पेसिफिक कैटेगरी, द स्पेसिफिक वर्ड विच इज स्पेसिफिक इन नेचर. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू कीप दिस अर्थ इन दैट द कैटेगरी. ठीक है, ये अर्थ भी किस में आएगा बेटा? एज द सन ओनली इट विल गो टू दैट द पॉट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एयर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वर्ड एयर. जब हम एयर के बारे में सोचते हैं तो वी आर थिंकिंग ऑफ ओके वॉट एवर एयर वी आर टेकिंग इन ब्रीथ. हम जब ब्रीथ लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं, उसमें जो लेते हैं दैट इज एयर. सो नो डाउट इज स्टार्टिंग विथ ए. ओके, तो यू विल से मैम ये तो ए एन एयर होना चाहिए ना, इट इज स्टार्टिंग विद दी वोवेल. बट नो, इट इज दो स्टार्टिंग विद दी वोवेल, बट वी हैव टू सी द स्पेसिफिकलिटी ऑफ दैट वर्ड एंड दैट इज A, air. So air will go to the category, the air. Okay, चलो. लिटरली वॉट एवर नेचुरल एलिमेंट्स आर देयर, जो नेचुरली है, दे ऑल विल गो टू द कैटेगरी ओनली. सारे द कैटेगरी में जाएंगे. ठीक है, द एयर. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एग. एग का मतलब अंडा. तो यू विल सी दैट ई स्टार्टिंग वर्ड इज स्टार्टिंग लेटर इज ई. ओके, सो ई इज वोवेल और कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो यू विल से यस मैम इट इज अ वोवेल. तो ए एग कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इट इज अ वोवेल साउंड. सो विच लीफ इट विल गो, विच पॉट इट विल गो? एन पॉट. ओके, सो एन एग. एवरी टाइम यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द नेम ऑफ द वर्ड. आप पहले वर्ड बोल दो कौन सा वर्ड है एंड देन यू हैव टू सी. ओके, दिख रहा है ना बेटा एग? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा स्क्रीन रोटेट करके देख लेना. ठीक है, इट इज ओके.
Now the next word is moon. You can see that the word moon. Okay, so here also as sun, earth, moon is also specific in nature. ठीक है, moon एक ही है आकाश में, हमको हमारी पृथ्वी से एक ही moon दिख रहा है हमको. So that's why it is also specific. So as it is specific, it will go to the category. Okay, so sorry, I've just sticked it. Okay, so I'm going to stick here only. Moon, I think आपको दिखाई दे रहा है moon. ठीक है, now only 2 leaves are remaining. That is first is boy. So boy is starting. Boy तो specific नहीं है. So many boys. It is having plural. जिसका ज्यादातर plural है ना बेटा, वो द में नहीं जाएंगे. उतना याद रख लेने का आपको. If the word is having a plural, then you have to think of A or N. So you have to think like A boy or N boy. So you will say ma'am, B is the consonant, not the vowel. Vowel तो नहीं है ना. A, E, I, O, U. उसमें B नहीं आता है. A आएगा, तो यहाँ पे it will go to A pot. Okay, so I'm going to stick over here boy. And last one is with us, that is sky. Okay, तो sky का skies सुना है कभी आपने? नहीं सुना है, because it is not having a plural. Okay, तो sky का मतलब आकाश. It is specific in nature, like the sky. A और N के बारे में नहीं सोचना. It will go to the pot only. Okay, so I'm going to stick over here the sky. Okay, so now I'm ending my activity here. You can see that it is looking too beautiful. बहुत अच्छा दिख रहा है. ठीक है, if you are not able to like read the words whenever I have spoken the words, you need to just write the words so that you'll get to know that which examples the ma'am has taken. Okay, so yes, here I am ending my activity. Okay, I hope that you got it, that which word should go to A category, or for which word we can place A article, N article or the article. Okay, chalo, note the doubts and let me know in our Zoom classes. Your ma'am is signing off. Beta, bye bye.